So now let us talk about CSV files in Python. Very, very important. CSV files in Python, or we can say CSV file handling. This is the third type of file that. So by this topic, this will be the end of file handling, your curriculum, CSV files in Python. So first of all, let us understand what is this CSV. CSV stands for comma separated values. This is the meaning. This is the meaningful form of the CSV, comma separated values. CSV stands for comma separated values. .csv extension. .csv extension will be used used for CSV files. And these files are just like your Excel files. This is the main thing. CSV files are just like your Excel file. Excel files, Microsoft Excel file, in which we can store the data in tabular format. And once you will store, CSV files are widely used in real world applications where data is to be imported and exported. जहां भी मुझे डेटा को ह्यूज इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करना है, एग्जांपल्स Microsoft Teams also uses CSV files, import export for users. Microsoft Teams also use CSV files for import export of users. Okay, this is widely used. It's not CSC, it's CSV. This is widely used extension. Now let me show you how it is Excel kind of thing. And one more thing, we can open a CSV file by using Notepad also. Excel में तो open होगा ही होगा, by using Notepad also. Let me show you. Let's create one Excel. Let's take one. Let me open the Excel so that we can see how the CSV file will look like. Let me just zoom it. Suppose that I am just right now writing here roll number, name, marks, and class. Fine. Let's just store some record in it. Fine. So we have stored these records in this Excel file. Let us store in CSV format. Save as, browse. I am just storing in Python folder. From here, I am just choosing see this CSV, comma delimited CSV extension, and let's save it. Yes. Okay, let's close it now. And let us try to open that file in Notepad. What you will see in Notepad, let me just open it first so that you can understand. Okay, this is the file. This is book 1. The name of file was book 1. You can see Microsoft Excel, comma separated values file. Let's open this file in Notepad. Here we go. See this now.
If a record consists of, actually this is not record, first one is header, record will start after the first row. So this is, you can say there were 4 columns in the Excel file. There were 4 columns in the Excel file. So all the names will be separated by comma. That's what the name comma separated was given. Comma separated values, the name was given for this. सारे कॉलम जो है नेम्स जो है वो सेपरेटेड, नेम्स एंड वैल्यूज विल बी सेपरेटेड विद कॉमा ओनली. ठीक है. नाउ सी फर्स्ट रिकॉर्ड 1 comma ram comma 100 comma 12. Why it is given comma why the comma is given? So that it can be related. Roll number 1 है, name ram, marks 100, class 12. Third record you can see, and fourth record. This is the meaning of comma separated values. Okay. Now let me just modify this. Instead of this roll number, let's try to create a CSV file by using Notepad. Let's write ID, comma name, comma salary, comma age. 1 Ram, suppose, and 2. I'm just creating. I'm trying to create a CSV file by directly typing it. By looking at this, we can see when we will open this in Excel, first header will be ID, name, salary, age, then record, and then next record. Let us store this. Let's save it. Save kar diya. I will just open this now. You will see the magic. See now. Let's just increase the width. See this. This is the beauty of CSV file, that these files can be directly opened in Excel for easy formatting, for easy viewing. Directly it can be opened in Excel for easy viewing, so that everybody can manipulate these data directly by using Excel. And these files are basic files that can be opened in Notepad, so they can be imported and exported anywhere. कहीं पर भी आप उन्हें import export करवा सकते हो. ठीक है. So ये था अपने पास में introduction and some kind of brief theory. Now next thing is the next very important thing. In Python, CSV files are handled by using CSV module. CSV module. So we will import CSV module in our program. It's very easy. Only very few functions are there in our program. And CSV module contains reader and writer function. We will understand this. What is the meaning of this? Okay. So now, first of all, let us start with CSV file operations. We'll discuss read and write operation. CSV file operations. We have to discuss first of all writing data into a CSV file. Write कैसे करें? Writing data into a CSV file. ठीक है, बहुत simple है. Let me write very easy steps for this also. Very easy steps. Few easy steps. And what are those few easy steps? First of all, of course, as we do for all the files, we have to open the file. Or first of all, import the CSV module. ये करना ही करना है अपन को. And second thing, open the CSV file. ओपन करना है CSV फाइल को. ओपन का मतलब डबल क्लिक नहीं करना. वी हैव टू ओपन लॉजिकली इन आवर प्रोग्राम. ठीक है. एंड थर्ड, नाउ आफ्टर ओपनिंग we will use writer function. I will let you know what is the meaning of this. Writer function of CSV module. Writer function of CSV module by which we can store data in the
CSV file, writer module. We will understand by graphical way. First of all, let me write these points. Then by using write row function, we will store rows records in the CSV files by using a loop. Of course, loop मुझे use करना होगा क्योंकि बिना loop के आप बार बार store कैसे करोगे, ठीक है? Now let us just understand these 4 points and बाकी सब same ही है, close करना file को and all such things. Let us understand what exactly is to be done. Let me open this for you. Okay. So now, first of all, what happens? Suppose, let me just write one. Okay. So suppose that if I write here, let me add one note here. Okay. Suppose if I write f1 equals to open function and then suppose abc dot csv comma r, बाइनरी नहीं आएगा, r, ठीक है? तो what it will do, it will create a handle. It will create a handle. Suppose f1, this is f1. This is a remote controller. You can say this is a remote control. And here, suppose this is our abc.csv file, in which I'm just treating it like a Excel file. I'm just treating it like a Excel file. ठीक है, मैं इसे एक Excel फाइल के जैसे ही ट्रीट करूंगा. Okay, so this is our, what is that, abc.csv, in which there are certain records and all everything is stored. Fine, ठीक है. तो रिमोट कंट्रोल तो मैंने ले लिया, रिमोट कंट्रोल मैंने करा. अब मुझे क्या करना है? अब मुझे डेटा को ट्रांसफर करने के राइट्स मांगने हैं. डेटा को ट्रांसफर करने के राइट्स मांगने हैं. तो बेसिकली ये जो राइटर फंक्शन है, व्हाट आई सेड दैट, जस्ट ए मिनट. ओके, after this, so after taking this thing, like I have just used data, मैंने क्या करा, एक रिमोट कंट्रोलर बना लिया जो हम हमेशा करते आ रहे हैं. इस फाइल से वो कनेक्ट हो गया है, ठीक है? नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस राइटर फंक्शन? डायरेक्टली, अब ये जो अपने पास फाइल हैंडल है, ये डायरेक्टली CSV फाइल में डेटा स्टोर नहीं कर सकता. नॉर्मल फाइल, नॉर्मल रिमोट जो है वो CSV फाइल में डेटा स्टोर नहीं कर सकता. ये कुछ ऐसा ही है. सपोज आप इमेजिन करो, आपको क्या करना है कि मुझे क्या करना है, अब बाय यूजिंग मेरे टीवी के अंदर, टेलीविजन के अंदर मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है एंड्रॉइड को. और आपका टीवी एंड्रॉइड टीवी नहीं है, ठीक है? तो मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ फायर स्टिक वगैरह इंस्टॉल करनी पड़ेगी. कोई भी मुझे ऐसी स्टिक चाहिएगी जिसकी हेल्प से मैं क्या कर सकता हूँ, अपने रिमोट जो मेरा फाइल ऑब्जेक्ट था, अब मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ बाय इंस्टॉलिंग दैट फायर स्टिक इन माय टेलीविजन, ठीक है? तो राइटर फंक्शन क्या करेगा, ये है राइटर फंक्शन, एक फंक्शन है राइटर फंक्शन क्या करेगा, CSV मॉड्यूल में सिंटैक्स सिंपल होगा, CSV डॉट राइटर. हम क्या करेंगे, इसके ऊपर एक लेयर चढ़ा देंगे, राइटर की, इसके ऊपर एक लेयर को पुट कर देंगे.
राइटर की, ठीक है। नाउ राइटर ऑब्जेक्ट के पास राइट चले जाएंगे। सपोज मान लो मैंने एक राइटर ले लिया W, F1 और W, F1 ने क्या करा, राइटर ऑब्जेक्ट को अपने राइट दे दिए, और अब इस राइटर ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं डेटा ट्रांसफर कर सकता हूँ, यानी मैं अपने मोबाइल को कनेक्ट कर सकता हूँ अपने टीवी से, ठीक है। मैंने, इसका मतलब नया रिमोट कंट्रोल बन गया। यू कैन से दिस इज मॉडिफाइड रिमोट कंट्रोलर, दिस इज W इज ए मॉडिफाइड रिमोट कंट्रोलर। एंड नाउ इस W के ऊपर क्या करूंगा, मैं डेटा ट्रांसफर किससे कराऊंगा, इस CSV फाइल के अंदर। दोबारा देख लो क्या हुआ था, सबसे पहले नॉर्मल फाइल ऑब्जेक्ट बनाया, क्योंकि फाइल को ओपन करना है, ठीक है। फाइल को ओपन करा, ये नॉर्मल ऑब्जेक्ट जो है ये सिर्फ टेक्स्ट फाइल में और बाइनरी फाइल पे काम करता है। नॉर्मल ऑब्जेक्ट टेक्स्ट फाइल एंड बाइनरी फाइल में काम करता है, ठीक है। बट नाउ यू नीड मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट बिकॉज नॉट यू आर नॉट डीलिंग विद टेक्स्ट फाइल, दीज फाइल्स कैन बी ओपन इन एक्सेल ऑल्सो, ठीक है। तो मुझे एक स्पेशल रिमोट कंट्रोल चाहिएगा, स्पेशल रिमोट कंट्रोल जो क्या करता है, राइट करता है डेटा को एक्सेल फाइल के लिए, ठीक है। तो क्या करा, इस F1 ऑब्जेक्ट को मैंने कहाँ राइट्स दे दिए, W राइटर ऑब्जेक्ट को, राइटर ऑब्जेक्ट को मैंने राइट्स दे दिए। राइटर ऑब्जेक्ट ने F1 से राइट लिए और एक नया पाइप क्रिएट कर दिया। एंड नाउ बाय यूजिंग राइट रो फंक्शन, व्हाट आई हैव रिटन, राइट रो, वेरी इजी, राइट रो, नाम से लग रहा है क्या करेगा। नाउ राइट रो, इस W की हेल्प से, ये जो W है ये क्या करेगा, बाय यूजिंग राइट रो फंक्शन it will store the records by using simply write row. And how will you call, very easy, W dot write row, W dot write row मैं कॉल करूंगा और रिकॉर्ड्स मैं इसमें ट्रांसफर करता जाऊंगा, ठीक है। तो सिंपल सा था, नॉर्मल फाइल ऑब्जेक्ट से CSV फाइल में डेटा ट्रांसफर नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ टेक्स्ट मोड और बाइनरी मोड में डेटा ट्रांसफर करवाता है, ठीक है। अंडरस्टूड दिस पॉइंट। तो मुझे इसके लिए मॉडिफाइड राइटर ऑब्जेक्ट चाहिएगा, मॉडिफाइड रिमोट कंट्रोल चाहिएगा, जो कि राइटर फंक्शन देगा आपको इस फाइल हैंडल के ऊपर, इस फाइल हैंडल के ऊपर राइटर ऑब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। मैंने नाम रख दिया W, यू कैन गिव एनी नेम, एंड देन बाय यूजिंग राइट रो फंक्शन it will be transferring the data into this particular CSV file. Okay, so now let us understand this practically. Let us understand this practically. So first of all we have to understand writer function. मुझे writer function को समझना है सबसे पहले। This function is used to create a special file handle by which we can store data in CSV files. By which we can store data in CSV files. ठीक है, very simple definition. Now syntax. Remember this function will return you the writer object. This function will return the writer object, which I called modified remote controller. Modified remote controller. So writer, and in that file handle. ठीक है, syntax of calling very easy. कैसे कॉल होगा, CSV डॉट कोई भी एक ऑब्जेक्ट रखना इक्वल्स टू CSV डॉट राइटर एंड देन फाइल हैंडल, CSV डॉट राइटर, ठीक है। राइटर कौन से वाले पे, फाइल हैंडल पे, क्योंकि उसी फाइल में ओपन करना है मुझे, उसी फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना है, और ये आपको एक मॉडिफाइड ऑब्जेक्ट देगा। अब इसकी हेल्प से मैं डेटा को स्टोर करवाऊंगा, ठीक है। एंड नाउ सेकेंड फंक्शन जो पढ़ना है अपन को वो था राइट रो। राइट रो function, very simple. This function is used to store one row inside a CSV file, inside a
CSV file. It will accept a sequence of multiple values as argument. One argument. Do remember, only one argument it accepts. Only one argument. So let me write the syntax. Write row in that sequence. Syntax of calling. Now on W, that writer object dot write row. Let me write one simple example. Suppose value 1, value 2, value 3, value 4, anything you can store inside that particular CSV file. Okay, very easy. Now let us do this programmatically. Question 1. In your course, this much is in CSV file. They have only mentioned reading and writing, just reading and writing. Write a program to store records in a CSV फाइल. स्टोर करने रिकॉर्ड CSV फाइल में. ठीक है, राइट मोड में ओपन करेंगे या अपेंड मोड में ओपन कर लो. तो नाउ लेट अस क्विकली क्रिएट दिस प्रोग्राम. वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टोर दिस and writer.csv. import CSV. मुझे pickle module नहीं चाहिए because we are not dealing with binary file now. These are text files which can be opened in Excels. ठीक है, import CSV. First of all let's open. वही सेम काम है. Let me write suppose student dot CSV comma write mode. Let me say write mode only. Okay, that's fine. After this we have to create the modified, that is writer object लेना है मुझे. अब मैंने क्या करा, w equal to CSV dot writer and F1. ठीक है, हो गया अपने पास में CSV dot writer and F1. इतना काम कर लिया. अब सबसे पहले एक हेडर रो इंसर्ट कर देते हैं. इंसर्टिंग okay, one thing we have not, just a minute, let's see whether give me 1 minute. Okay, import CSV. Okay, fine. CSV dot writer F1. Now what we have to do after this, first of all let's insert one header row. W dot write row. मैं एक header row insert करता हूँ students में. Let me write one comment here initially. Write a program to store records of students in a CSV file. और क्या स्टोर करना है? रोल नंबर, नेम, मार्क्स. सपोज दिस ओनली. तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, राइट रो में हेडर कर दिया स्टोर, रोल नंबर. नाउ यू कैन पुट डॉट ऑल्सो, इट्स अप टू यू. रोल नंबर, नेम एंड मार्क्स. ये मैंने हेडर रो को स्टोर कर दिया. कहाँ पर? उस पर्टिकुलर फाइल में. ठीक है. नाउ वी डोंट नो हाउ मेनी रिकॉर्ड्स वी वांट टू स्टोर. तो लेट्स टेक द इनपुट फ्रॉम यूजर. यूजर से पूछते हैं, बताओ हाउ मेनी रिकॉर्ड्स यू वांट टू स्टोर. How many records you want to store? For I in range 1 comma n plus 1. Okay. Now here, first of all, you have to just mention
enter record of student I and then record of student I mention कर दिया. इसके बाद में क्या करना है, इनपुट करवाओ. एक वेरिएबल ले लिया, रोल नंबर इक्वल्स टू enter roll number, then name equals to enter name, marks equals to enter marks. ठीक है, ऑल थ्री थिंग्स मैंने एंटर कर दिया. अब या तो इसका एक रो क्रिएट कर लो. कैसे, एक वेरिएबल ले लिया रो नाम से और इसे लिस्ट में डाल दिया, रोल नंबर कॉमा नेम कॉमा. विल ऑल्सो चेक वेदर वी कैन यूज टपल और नॉट. आई विल लेट यू नो. रो क्रिएट कर ली. अब सिंपल w डॉट राइट रो and then insert this. And if you don't want to create variable, what you can do, you all know, simply you can write like this, roll number comma name comma marks in this. It's up to you. If you want, you can store, otherwise directly. And after this, print one message, all the rows are stored successfully. All records are stored successfully. And then close the file, f1 dot close. Here we go. Let's run it. How many records you want to store? Suppose 2. Roll number 1. Yes, roll number 2. And all records are stored successfully. Let us open that file. Let us open that file. We have stored as students.csv. Yes, this is students.cs. Let's open this. One thing you are now, see this. There is one suspicious thing you are seeing here. You are seeing one suspicious thing. Okay, records are stored perfectly fine. That we are seeing that all the records are perfectly stored. But one suspicious thing that you are seeing here is that after storing a record, after storing a row, there is one backslash n. There is one backslash n which is stored here. After that, our second record, after that, our second record is stored. After that, our second record is stored. That is fine. And then after, one more line gap is stored. And then our third record, is stored. Then our third record is stored. And then one more line gap. ये भी line gap है. ठीक है. This is one problem that we are seeing here कि अपने पास में एक line gap अपने आप बन रहा है. Line gap अपने आप बन गया. ठीक है. तो how can we remove this? Because we don't want this extra row in between the rows. That is wrong thing. तो गलत हो रहा है अपने पास में कि एक्स्ट्रा रोज भी वो स्टोर कर रहा है एम्प्टी लाइन के चक्कर में. ठीक है. दिस इज बाय डिफॉल्ट. ये बाय डिफॉल्ट फंक्शनैलिटी है जो क्या करता है अपने पास में, जो आपके पास में बैकस्लैश एन क्या करेगा, ये आपको स्टोर करवाता है. बैकस्लैश एन स्टोर करवाएगा. ठीक है. तो हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? हाउ कैन वी ओवरकम दिस प्रॉब्लम? सिंपली बाय स्पेसिफाइंग वन एट्रीब्यूट कॉल्ड न्यू लाइन, वन एट्रीब्यूट कॉल्ड न्यू लाइन. एंड उस न्यू लाइन की वैल्यू को जो मैं क्या करूंगा, स्पेस ब्लैंक कर दूंगा. ब्लैंक. लेट मी शो यू. सपोज दैट हियर इट इज. ओके. नाउ लेट मी राइट हियर न्यू लाइन इक्वल्स टू, and let's just run it again. Okay, it is giving, sorry. First of all, let's run it again. Let us run it again and let's see what exactly is what it was doing it. And okay, roll number, and then let's enter this name, and then again enter the marks, and then roll number, and then again let's enter the marks, and then again. Okay, all the records are stored successfully. First of all, we will see that whether the text file also contains the space or not, whether the text file also contains the space or not.
If text file will not contain, then what we can do, we can simply say that in text file it is not coming, but in that it's coming. But it is not the way. In both the files you will see extra. You will see extra line in between the records. You will see extra line in between the records, and that is not a proper thing. Okay, so now let me just open this in desktop. Okay, and here first of all see this. Let me just zoom it. Here you can see that extra line is coming. Extra line is coming. Okay, that we have understood that extra line is coming here. Now let's open this. Let's open this in. Let's open this in Notepad. Okay, here also. Yes, everywhere this particular thing is coming. That new line is coming after every record. So how can we use it? We have to use new line attribute. What we have seen that writer. Okay, fine. Let's make it here. New line equals to, by default it is \n. Let me just make it empty and let's just run it now. How many records you want to store? Suppose 3, or let's say 2 only. 1 Ram 100, 2 Sham 100. All records are stored successfully. Now let's just open it again. The same file. Here we go. It's working now. Now that line is not coming in between the two lines. That line is not coming in between two lines. So do remember, open function is having a by default value of \n in the new line. In the new line attribute. So what we can do, we can change it. We can change the value of new line attribute, and by using this, it will not give the empty line in between the records. Let's open in Notepad. Fine, it's opening in Notepad also with the separation point of comma. So this thing we have understood a new line attribute, so that we can stop this particular new line entering. Otherwise it will store the records. So let me write one special point. Special point. Make sure to use new line. You can say this is parameter with value empty string inside the open function while writing, so that after every record a new line will not be inserted. Otherwise it will insert a new line after every record in the CSV file. Okay, simple. ऐसा कुछ था. F1 equals to open. Suppose let me write a students.csv, comma, एक तो मैंने लिखा ये, and, और दूसरा क्या है, same example, let me copy this, comma, new line equals to empty. ठीक है, तो this will prevent insertion of new line after every record, and this will store a new line after every record. This will not prevent. This will not prevent new line insertion. ठीक है. Now suppose instead of this, if you will put \t, by default यहाँ \n लिखा होता है by default. अगर यहाँ \t लगाओगे तो क्या होगा, हर लाइन के बाद में एक टैब आएगा. हर लाइन के बाद में टैब. अगर यहाँ आप हाइफन लगाते हो
तो हर लाइन के बाद में एक हाइफन आ जाएगा, बट वी डोंट वांट एनीथिंग आफ्टर एवरी लाइन। तो क्या करा मैंने, इसको ब्लैंक कर दिया। आई हैव जस्ट पुट ब्लैंक और एम्प्टी स्ट्रिंग। ओके, दिस इज वेरी इजी। तो वी हैव अंडरस्टूड सिंपल थिंग, सिंपल प्रोग्राम। CSV मॉड्यूल इंपोर्ट करो, फाइल ओपन करो, न्यू लाइन एट्रीब्यूट का यूज करो, एंड देन take the writer object, because we cannot store directly in CSV file by using normal file handle. We need writer object. ठीक है, फिर राइट रो से हेडर रो इंसर्ट कर दी, हेडर रो जिसमें हेडिंग स्टोर होगी। आफ्टर दैट इनपुट किया कितने रिकॉर्ड है, देन एक लिस्ट बना ली, एंड राइट रो फंक्शन से मैंने उसको स्टोर करता गया। लेट्स जस्ट ट्राई विद दिस। दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस, दिस इज ऑल्सो सीक्वेंस। हाउ many records? Suppose 2, 1, Ram, 100, 2, and 100. Okay, so we can use this tuple also. There is no problem in it. There is no problem in it. So now we have stored it. Now let us quickly understand how to read from CSV file. Second topic is reading data from CSV files. This is also very, very easy. Reading data from CSV file. That means reading the Excel file. The file which we have just created, we want to read the records. Record by record, read करना है. So few easy steps. Very same steps हैं. Import the CSV module. Okay. Open the file in read mode. Read mode में open करूँगा. So you can use this also CSV file in your project. Open the file in read mode. Now we will use reader object. अब देखो, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपको, राइट नहीं होता डायरेक्टली तो रीड भी नहीं होगा। नॉर्मल फाइल हैंडल जो है, जो रिमोट कंट्रोलर है, वो रीड नहीं कर सकता CSV फाइल के रिकॉर्ड को। उसके लिए आपको रीडर ऑब्जेक्ट चाहिएगा। रीडर ऑब्जेक्ट ही क्या होता है? स्पेशल फॉर्मेटेड ऑब्जेक्ट विच कैन रीड द रोज ऑफ दैट पर्टिकुलर CSV file. Use reader object to read the contents of CSV file. Now we can use a loop to iterate records, or we can also first convert it into a list, and then we can use a loop. We can use a loop to print the records. That's it. And then close the file. Very easy. Okay. So now here reader function we have to understand of CSV module. This function is used to read the contents of CSV file. It will take all the contents of CSV file and store and returns the reader object. Returns the reader object. Return करेगा reader अपना object. ठीक है, तो syntax very simple. Reader इसके अंदर क्या आएगा? File handle. And syntax of calling, again since it returns object, you will create one object called reader object. Any name you can give. CSV dot reader and then file handle. CSV dot reader and then file handle. Very easy. Let me just write the program. Write a program to print the content of CSV file. Very simple. To content the CSV file. So let me just take one new program. Here
let me make one comment. Same thing, import CSV. You have to practice these questions so that you can also understand. Import CSV हो गया. After that, first of all, we have to open the file. F1 equals to open. Same students.csv, read mode. Now new line वगैरह कुछ नहीं आएगा because we are not writing. Let's store it first. CSV read. After this, let's take the reader object. Let me take R equals to CSV dot reader. ले लिया. Now, do remember you cannot directly print this. If you will print directly, it will not give the all records. It will give you the reader object location. Let me just show you. Either you can convert it into list or use the loop. Just see. It is giving one location. This is the location where your records are stored. This is the location where your records are stored, and reader object is pointing this particular location where all the records are stored. Fine. So we cannot use this. If you want to print, so never print this. Let me write one comment here. One comment. Never print the reader object as it contains the location. So what we can do, we can iterate it. जैसे range function होता है ना, let me show you range function today also. Let me show you range function also. Range function को भी आप, we know that meaning of this is it will generate values from 0 to 4. But still if you print the value of R, what it will give you? Let me write R1 here. No problem. We have discussed this also. हमने हमेशा देखो range 0,5 R1. If you want to print this, मैंने क्या करा, for X in R1 and then print X. Let's just see it now. See now, values are coming. So these objects are not directly giving the answers. You have to iterate by using loop. So now reader object has came. What we have to do simply, this is a sequence. Do remember this is a sequence of records. So just let me write one variable I in R. Reading here, traversing the reader object records. Very simple. And let's just print I. And यहाँ पर एक comment, एक message डाल दिया, print reading CSV files records. That's it. And after that, let's run it. See, roll number, name, marks, 1 Ram 100, then 2 Sham 100. Now you can see that again it is coming in single double quotes. It is coming in single double quotes again because this is a text file. This is just a text file only. 1 Ram 100, 2 Sham 100, and then it is printed. सारे के सारे रिकॉर्ड अपने प्रिंट हो गए. ठीक है, this is one way. And second way is, if you don't want to use this reader object, what you can do, you can convert this reader into list explicitly. Let me write records equals to list of R. Converting reader object into a list. Now we know that how to traverse a list for X in records. बात बराबर है? If you want, you can use it. If you want, you can use it. Now see the answers. It is giving same answers. One record, second record, third record. Now, if you don't want this brackets to come, अगर तुम brackets नहीं चाहते हो, now see here. Let me write one comment here. We want to print a record in formatted manner. ठीक है, ध्यान से देखो. In this example, X is a list only. In this example, records is like a nested
लिस्ट, इट इज लाइक ए नेस्टेड लिस्ट. रिकॉर्ड क्या है, कुछ ऐसा था. 1 1 राम 100, comma 2 Sham, and then 100. This is a kind of thing that your records is having. ठीक है. Okay, let me just make it to the next line. Fine. Records एक nested list है. ठीक है. तो X क्या कर रहा है, 1 by 1 X is taking 1 by 1 every record from this and printing it. तो first time X will hold 1 Ram 100. Then X will hold second record. X will hold this one. Now we know that we can use a loop to print this also. मैं यहाँ पर इसको भी print कर सकता हूँ loop से. How can I print? Very easy. For suppose let me say B in X and print B. तो अब क्या होगा, सबसे पहले X ने रिकॉर्ड लिया, देन इस लूप में आ गया for B in X. तो पहले 1 प्रिंट होगा, देन कर्सर नीचे आएगा, फिर राम प्रिंट होगा, देन कर्सर नीचे आएगा, देन 100 प्रिंट होगा. Let us just do it and let's observe the behavior for B in X and print B. Then we will do some modification in the output. See now, roll number, name, marks, 1 Ram 100, 2 Sham 100. Not is not printing anything kind of list, and we don't want this to be come in next line, but we can do and equals to. अब देखते हैं क्या होगा. Again strange, not is coming in one line. So what we can do, after we know that this internal loop will print one record at a time. So once this loop is finished, let's give a line break. Let's give a line break. Now let's see. Now something different we are observing, row by row. ठीक है, roll number आ गया, then नाम आ गया, then अपने पास में ये सब आ गया. Okay, that is fine. Now we want कि यहाँ पर कर्सर थोड़ा सा स्पेस आ जाए, थोड़ा सा स्पेस आ जाए बीच में, या कॉमा आ जाए. After this value, it should print a comma. Now here we go. Roll number, name, marks, 1 comma Ram, and then print हुआ. Instead of comma, you can have space backslash t also. Separator को change कर दो, separator को blank कर दो. Now see. Yes. Now it is properly formatted data. Roll number, name, marks, 1 के बाद में Ram, then 100, 2 के बाद में Sham, then 100. This is the complete example by which we have printed the records in a proper manner. Okay. So this is all about reading and writing into CSV files. Now you have to do a lot of questions in this CSV file also. You can start doing questions of searching in a CSV file. Same यहीं से होगा, ऐसा ही चलेगा. सर्चिंग करो, डिलीट करने की कोशिश करो, अपडेट करने की कोशिश करो. ओके. So this is all about CSV file reading and writing.